दोस्तों तो आज हम बात करेंगे टॉपर्स की जो टेस्ट सीरीज़ की कापी होती हैं, जो वो कापियाँ लिखते हैं रियल एग्ज़ाम से पहले। आप बोल सकते हैं कि ये मॉक टेस्ट हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये लोग लिखते हैं। हाईलाइट द इशू faced in BOT and EPC model of infrastructure investment. Explain how HAM can address this. BOT, EPC and HAM are all three are different model of ट्रिपल पी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों को बता दें कि जो ये ट्रिपल पी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस में इस बार भी पूछा गया है। तो बेल्ट और पैरेक्ट ट्रांसफ़र, ऑपरेशन रिस्क, सैलरी इशू इन डिज़ाइन एंड कोलैप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इशू इसमें आते हैं। फिर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ये है। रिसोर्स प्रोक्योरमेंट इशू, लेबर इशू, लॉक ऑफ फाइनेंस, फॉल्टी एंड वीक डिज़ाइन, हाइब्रिड एनोमिटी मॉडल जिसको HAM बोलते हैं, फाइनेंस शेयरिंग बाय गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, रिफॉर्म बेस्ड मॉडल, पेमेंट शेयरिंग एंड ऑपरेशनल रिस्क, ट्रैफिक फ्लो, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एग्रीमेंट इन रेवेन्यू शेयरिंग। 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज एट एन अनसेटल्ड मैटर इन आवर इकोनॉमी ऑल्सो। Comment also mention the step which the government has taken to improve its extent. Data availability on extent of formal employment has been to revival issue with different government providing different statistics. It has been difficult to answer statistics of formal employment. Institutional survey method, GST registered companies, NSO employment. What are the issue on reliability of any one set of data does not capture new job creation in formal sector, lack of integration between different data set, different estimate by different method, non-transparency in method of data collection, lack of integrated approach and framework, manipulation of data sets, step taken by government and also to collect employment unemployment data every year, launched Shram Suvidha portal for companies to register about their labor force, labor identification number, unique ID, integration of PAN with Aadhaar to streamline data set, GSTN as source of big data and employment duties. Investment rate in India has gradually declined after a historic high in mid-2000s. Examine the reason behind this trend. Discuss the steps required to revive investment for sustained growth. Investment rate refers to gross capital formation (GDP) ratio, which has declined almost 10 percent points since 2000. Reason क्या है? Post economic boom of LPG liberalization, privatization and government's globalization effect, global crises such as global financial crisis of 2008, EU policy of federal trapping, decrease in foreign investment, fiscal consolidation weakness, NPSU in bank, incompetent contribution of reduction in efficiency of infrastructure company, total investment, weakening savings rate, decline, step required, stable
Monetary policy, ease of doing business for foreign investors, banking sector reform, trade race, NPAs, non-performing asset, IBC code, joint tender forum, management reform, public credit regulatories, sparse capital. Okay. Role of international trade in achieving a quicker pace of economic development is well recognized. What are the benefits of international trade for developing countries like India? Highlight the challenge that India faces in improving its share in world trade. The international trade refers to both export and import in goods and services, transfer of टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बेनिफिट हैं ये इसके कुछ इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मीन ये होता है कि जब हम किसी अदर कंट्री से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो वहाँ की जो न्यू टेक्नोलॉजी होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनसे उनकी से हम हमारी सीखते भी हैं। इम्प्रूव इन बायलैटरल रिलेशन, access to vast global market. Other benefit हैं prestige of available resource and expertise, high level of productivity, sharing of knowledge, fulfillment of requirement when production is not permissible. In multinational companies investment establish branches global integration challenge a poor industrial base. This is how Topper writes the copy.